A very, very good morning to all of you. And at the outset, let me congratulate each one of you, because all of us know it is a matter of pride and prestige to be on the board of this club, a club which has a legacy which each one of us is proud of, a history which we all know, and yes, it means something to be on the board of this club. What is the purpose of having this orientation program? So all of us know, सब अपना घर चलाते हैं, काम धंधा चलाते हैं कि we fail to plan means we are basically starting a plan to fail. एंड एक छोटा सा होमवर्क आप सब कर लीजिए कि पिछले 10 साल में आप pick out 6, 7, 8 directors on the board. Out of that, it should be a mix of people who've done extremely well, those who've been all right, and those who've not been the best in discharging their duties as a board member. Talk to each one of them and ask them. And an interview will tell you that आप अगर कुछ भी नहीं करो, कुछ भी नहीं, as a member of the board, आप गायब हो जाओ, तो भी 80% काम होगा आपके बिना कुछ करे. Because this club is a very well-oiled machine. You work, like आपकी नौकरी दी हुई है तो सैलरी मिल रही है तो काम करना है, exactly like a babu in the government. तो आपको जो करना चाहिए था 100% एक्सपेक्टेशन वो काम हो जाएगा. And those who've gone out of the way, given themselves completely for a year and a half, done everything that they possibly could have done, their passion to the time to themselves, they've given everything, so they would have done 120%. So between doing nothing to giving yourself completely, the gap is that 40% only. But most important here is कि मेरे कुछ नहीं करने के बावजूद कुछ होता चला जा रहा है. Are you ready to accept that? Or are you ready to do things in a way that everything falls into place as per a plan? It happened is one, and second is it happened because I planned it. स्याही की भी मंजिल का अंदाज देखिए जनाब, स्याही की भी मंजिल का अंदाज देखिए जनाब, जब खुद ब खुद बिखरती है तो दाग बनाती है, जब कोई और बिखेरता है तो अल्फाज बनते हैं, अल्फाज बनते हैं. So now, did you let it happen or you made it happen? And therefore the purpose of being prepared for some post, position or duty or job that you are set to undertake. And then अगर कोई आपको रोल पूछे कोई कि कोई बोर्ड मेंबर है, कई है पुराने कि बोर्ड में आ जाते हैं, उसके 3-4 महीने बाद भी बोलते हैं एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड व्हाट इज माय रोल, how am I different from a common member? When you ask these questions, आपको लग रहा है you are hitting out at someone senior or elder in the club that they didn't probably tell you what they were supposed to, they didn't train you well, but no, आप उनकी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, आप अपनी खुद की कर रहे हैं कि सब ये कि so never should a position arise where you ask someone, what am I supposed to do? How am I different as a member of the board? And here, मुझे बताया ही नहीं था. और important एक और चीज है, देखिए आप member of the board हैं, so obviously not only your incoming president, but the nominating committee and otherwise the larger section of the club has seen something in you. Something which has made you worthy of being on an important position within the club.
These people have showered you with adulation. आपको सम्मान दिया है, आपको इज्जत दी है, आपको किसी लायक समझाया है. ये एड्यूलेशन को क्रिटिसिज्म में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता है. It all depends on you. So now you are in this position because you enjoy and hold a stature. See to it, the way you go about your job in this year, your stature at the end of the year increases and doesn't go down. एक ये इसी बात पे ये जो है कि आज ये पोजीशन पे बैठाया है और कल कैसे क्रिटिसिज्म करने में भी वही लोग शर्माते नहीं हैं. दो पंक्तियां हैं मेरी मेरी फेवरेट है, विच यू नो आई लव टू टेल, विच इज, यह संग दिलों की दुनिया है, यहां संभल के चलना गालिब. यह संग दिलों की दुनिया है, यहां संभल के चलना गालिब. यहां पलकों पे बिठाया जाता है नजरों से गिराने के लिए, नजरों से गिराने. सो टुडे they've put you here, tomorrow they'll pull that rug from under you, but everything finally depends on you. So this was the purpose. And now what is it being a board member? Being a board member, okay, so here you are a member and now you are a member of the board. How is it different? So a lot of people will use different words, and the most commonly used word is leader. लीडर बन गया, यू नो, नाउ यू आर इन लीडरशिप पोजीशन. और इतनी बार रिपीट होता है कि हम भी उसको बिलीव करने लगते हैं और सीरियसली ले लेते हैं कि सही में लीडर बन गए. सो आई विल टेल यू, योर पोजीशन हैज चेंज्ड. एंड यू नो हाउ हैज इट चेंज्ड? टिल यस्टरडे as just a member, you were a powerful person. You could ask any question anywhere, criticize anyone anywhere, give your opinion anywhere. And from there, today you have reached a position where you are the weakest person in the organization. Now anybody can ask you a question and you are answerable. Anybody can criticize you, judge you, and you are a subject to that criticism and that judgment. एक रिलेशनशिप बता देता हूँ. आधे लेडीज और आधे मेरे ख्याल से आदमी बैठे हैं इधर. तो ये हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप है कि जब तक के मेंबर है ना, आप कॉमन मेंबर, आप वाइफ है, जैसे ही बोर्ड पे आए आप हस्बैंड बन गए, तो आपकी बीवी आपको ज्ञान दे सकती है, आपको बिना मतलब के डांट सकती है, आपको कुछ कुछ करे तो पूछ सकती है, ना करे तो पूछ सकती है, अच्छा काम नहीं करे तो डांट सकती है, अच्छा काम करे तो बोल सकती है लेट घर क्यों आए आज. सो बट आप अपनी बीवी को पलट के जवाब देते हो? देते हैं क्या? नहीं. Because you have to take it in your stride. It's a part of being a husband. Similarly, being on the board is a part of being able to absorb that criticism and judgment without retaliating. So remember, not only do you have to do, you have to even hear, and not only hear, listen to what they are saying. And everyone wants to do a brilliant job and remembered for the good work that he or she has done. ये एक ह्यूमन नेचर है, एक ह्यूमन टेंडेंसी है. तो आपको सबको बता दूं कि हम बहुत गलत फहमी में जीते हैं. हर आदमी आज भी ये समझता है कि मैं कोई ब्रिलियंट काम करूंगा तो लोग मुझे याद करेंगे. मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप ताजमहल भी बना के जाइए, आपको कोई याद नहीं करने वाला है. अगले साल भूल जाएंगे कि ताजमहल पिछले साल बना था, कि उसके पिछले किसने क्या किया, किस साल में बनाया, किसी को नहीं मालूम रहता है. मगर एक कंडीशन है कि दे रिमेंबर व्हाट यू डिड. एंड अगेन दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट लाइंस. पीपल डू नॉट रिमेंबर यू फॉर व्हाट यू डिड इन योर ईयर, they remember you for what they did in your year. So your job is not to do a brilliant job. Your job is to make sure that others do a brilliant job.
and that is the true measure of your success. इस बात पे भी दो पंक्तियां कि आपका रोल क्या है एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड. मैं शून्य हूं, आप एक्चुअली जीरो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है. मैं शून्य हूं, मुझे पीछे ही रखना. मैं शून्य हूं, मुझे पीछे ही रखना. मेरा कर्तव्य केवल आपकी कीमत बढ़ाना है, केवल आपकी कीमत बढ़ाना है. सो यस, add value to the job that others do rather than trying to do it yourself. You are a policy maker. You are a person now who cannot ask questions, but is answerable and has to answer to any question raised, legitimate, illegitimate, logical, illogical. So anyway, logical or illogical, you have to carry people along with you. Taking people along is your job as far as being a member of the board is concerned. And now team building and what you have to do in the next couple of months that you have. First is make your team. I think that's the first job that you have in hand. So first thing is, लोगों को शौक रहता कि मेरे दोस्त भाई रिश्तेदार सबको पहले ले लूं अपने साथ के. So now horses for courses. Not only new people, because even that is your responsibility to bring in newer people, but people who would do that job brilliantly. See, ask, chairpersons and directors before you as to who deserves to be in that place, who's passionate about it, who knows that job well. तो ऐसे लोगों को अपनी टीम में लेके चलिए, और टीम में लेने के बाद पहला काम करिए कि प्लान बनाइए. और प्लान बनता है मीटिंग करने से. और मीटिंग में क्या होता है, लोग मिलते हैं, हंसते हैं, खाते हैं और घर चले जाते हैं. काम कुछ नहीं होता है. ऐसा आप सोचते हो, काम बहुत कुछ होता है. और वो ये होता है कि दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन बॉन्डिंग टुगेदर एज अ टीम. So when you call the meeting, you are not supposed to tell, you are supposed to listen. Whatever, there may be vague ideas coming. People may be speaking sense and some may not be speaking sense. It really does not matter. Listen to them, absorb. And by the end of these 2 months, I would say that you've succeeded even before you start your year if you've managed to do one thing. And what is that? Let us assume here Manisha has a particular committee with her. She has 3 chairpersons and she has 8 members, 11 people. अगर 11 लोगों को वो ये सेंस डाल सके कि आज मनीषा आपको पूरे 11 ने अपने घर में बोलना कि मालूम है क्या, वो डायरेक्टर जरूर है मगर काम मेरे कुछ करना पड़ेगा. पूरे 11 लोग अगर अपने घर में ये बात अपने फैमिली को बोल पाए कि वो मेरे दम पे है. If Jerry is able to put this germ into the mind of each member of our board, अरे मेरे दम पे है वो प्रेसिडेंट. लोग अपना ईगो अदरवाइज ले लेते, अरे ऐसा कैसा बोल दिया. But what you want is every person to feel that I am the most important person in that team. And that is the message that should go across, and you have to make them actually feel and believe. Feel and believe. Otherwise, it really comes to nothing. My point is, now in the next 60 days, make your team meet up either on the Zoom or either on the virtual or actual platform. I mean, I'm not going to go there. Make them feel important. Each person should feel inclusive, should know not only do I have a role, the most important role that has to be played is mine. Without me, Manisha is a zero. The moment that person starts feeling that, that person is never going to fail you, come what may. And similarly, in your whole team, like for example, I said 11 people in your team. नॉर्मली वो 3 चेयरपर्सन काम करते हैं, वो 8 जन को बेचारे को कोई याद भी नहीं करता कमिटी मेंबर को. वो कमिटी छोड़ो, बाहर वालों को तो हम पहुंच भी नहीं पाते हैं. मेक श्योर देयर इज एन इंटरलिंकिंग इन सच अ वे दैट नॉट ओनली डज दैट पर्सन फील he or she is the most important person, that person even feels that without my team around me,
this job is not going to be completed the way it should. And to inculcate that sense is your job, and that is your only job. You have nothing else to do. अगर आपको लग रहा है कि आपको वो प्रोजेक्ट कैरी आउट करना है, आपको वो काम करना है, नहीं, आपका काम नहीं है, आप करिएगा मत. आप काम यही करिएगा कि दूसरे अपना काम ब्रिलियंटली करें. एंड इस बात पे भी 2 पंक्तियां के वो हाथ लिए हाथ में चलते रहे मेरा. दिस इज व्हाट द फीलिंग एवरीबडी शुड हैव. वो हाथ लिए हाथ में चलते रहे मेरा. उन्हें रात का डर था, मेरा डर था सवेरा. उन्हें रात का डर था, मेरा डर था सवेरा. So everybody should have a feeling, I need that person, the other person should know I need the other person. This need should be mutual, the respect should be mutual, and your only, I repeat again, only job is to inculcate that sense into your team. Finally, participation. Yes, people are not listening to you, hearing what you say. They are more interested in watching what you do. So make sure that you are everywhere.